Hello and welcome. In Civil Service Examination 2023, one question in paper 1 of psychology has been asked, and that is related to recent trends. Question says that mental health study is the major recent trends in psychological studies in 21st century. Discuss. I am repeating the question that mental health study is the recent trends in psychological studies in 21st century. Discuss. I hope you have understood the questions. Some students find it difficult to structure the answer. So I'm going to give you the hint so that you could structure it well and see this thing. Recent trends in psychological studies in 21st century. I hope you understood. Now question is that what are the recent trends? You will come to know that only mental health study is not the recent trends. For example, there are recent trends. Of course, this is mental health studies. Then we come to realize that now socio-cultural perspective based study, this is also recent trends. Then qualitative perspective, or you can say data based studies. I want to say that apart from mental health studies, there are other studies as well that are in the you can say recent trends in 21st century. Now you should emphasize this thing, the question, because clearly asks that mental health studies is one of the recent trends. So you should elaborate this thing, discuss this thing. So in context you can write this thing that there are other things also. Getting? For example, feminist studies, action research, these are recent trends, in psychological studies. Now question goes forward that mental health studies, now what will you write? Question this in recent trends. So first of all, you should tell that what is the basis of telling this thing. It is one of the most recent trends in psychological studies in 21st century. So if we analyze the volume of research and not only volume, you can say theme. Theme and volume, you better to write on what theme research is being conducted. Then we come to notice this fact that take example of American psychological studies and its community psychology. You will say that community psychology, but what is the volume of the research that is being conducted within the framework of community psychology? Approach is community psychology, that community psychology perspective. But there is mental health model of community. Within community, there are social action model and mental health model, and there are underlying studies also. So within mental health model, the volume of the research is much higher than other form of research like social action research and all this. So I am giving you the idea. Apart from this thing, if you look at the PhD scholars, what they are pursuing,
then volume of the research, if you look at the things, you will find that major dominant theme is related to mental health studies. For example, clinical psychology, counseling psychology. I have said that even within community psychology also, you will find that this is the major theme of the research. So you should highlight this thing, and one volume is there that more than 30% of the research, more than 30% of the research is singularly is on this theme. So you can find in regular book also that within be it clinical psychology, psychiatry, uh, community psychology, be it counseling psychology, all these things are connected with this one. Apart from this thing, this is this one. Second thing is that you say how and why. So I'm trying to understand how you can say that is major thing. So data analysis will reveal that one. And second thing, that mental health problem have multiplied in the sense that see the amount spent on tranquilizer or some substances to treat anxiety and all these things. In USA, take the data sample from USA, year by year, there is a substantial increase in the uh, amount spent on this kind of thing. So this reveal that mental health problem is on rise. Mental health problem in not only in USA, but there in other part of the world also, Europe, for example, Asia, Africa, there is growing recognition of mental health problem. This is also the thing. So you can put the here that because of this thing that this has become this thing. Now in this bracket you can say that growing for example IT and all, internet addiction disorder, this kind of things was not present in the past. So now because of this technology and technological advancement, there is growing concern about the internet addiction disorder and all these things, and you find that several line of researches are focused on impact of social media on mental health, then late night working, then uh, you know uh, different timing of the work from home, many kind of things are there that is connected with the mental health. So you can say this thing that in recent time there is growing recognition not only in USA or Western, but in other part of the world also. Why I'm telling this thing? Because in Asia or Africa, the major perspective, this was not the वेल रिकॉग्नाइज थिंग्स. पहले तो लोग मेंटल हेल्थ को मानते ही नहीं थे. मेंटल हेल्थ बीमार होने का मतलब फीवर होना चाहिए, कुछ बैक्टीरिया वायरस से इन्फ्लुएंस होना चाहिए. दैट वाज सम मॉडल दैट वाज बेस्ड ऑन फिजिकल मॉडल. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज दैट यू कैन से सी दैट model of health, there was, for example, biological biomodel. Initially this was the thing. Now there is shift from biomodel to biopsychological to social model. What is the meaning of that? पहले के मॉडल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को भी हम बायोलॉजिकल मॉडल से समझते हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. देयर इज ए ट्विस्टेड मॉलिक्यूल फॉर एवरी ट्विस्टेड थाउट. अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, आपके थाउट्स डिस्टॉर्टेड हैं, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम neurotransmitter problem or some problem that has biological base. So this was the approach of science researcher. Now even within psychiatry they try to understand the things from the psychological angle. Apart from this thing, physical health is also being explored from mental health perspective. For example, hypertension could be
because of physical reason also and because of some psychological reason also. So two things are there. Because of this thing you will find that major trends in studies is there, that पहले तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था उसको दैट इज एक्सप्लोर्ड नाउ थ्रू मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लाइक take example of around T-Buck model. So the depression may be because of the faulty beliefs and distorted way of thinking. Okay, but now go one step further. Now there is a trend that even physical health, किसी का hypertension है या कुछ दूसरे physical चीज़ें हैं stress related, then what is the role of that stress in that physical problem? जैसे किसी को डायबिटीज है तो स्ट्रेस का कितना रोल है. सो दिस एंगल इज बीइंग एक्सप्लोर्ड. तो अब क्या हो गया मॉडल में, पहले ये बायो मॉडल था, अब मैंने फिजिकल चीज़ें जो है बायोलॉजिकल चीज़ें साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर. नाउ देयर इज अ स्टडी ऑन दिस वन दैट डोंट से देयर इज अ स्टडी मींस सीरीज ऑफ स्टडीज दैट ट्राई टू एक्सप्लोर impact of such beliefs, such mental processes, attitude, health related attitudes on physical health. तो देखो कितना बड़ा बदलाव है. तो मेंटल हेल्थ स्टडीज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, कि ऐसा नहीं कि केवल मेंटल हेल्थ पे स्टडी हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देर इज़ नो दिस बिकम मेजर ट्रेंड्स इन साइकोलॉजिकल स्टडीज़, कि जो अपने बायोलॉजी जो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो फिजिकल डिसऑर्डर है, जो नॉर्मल फिजिकल डिसऑर्डर है, उसमें हम स्ट्रेस के रोल को, उसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर के रोल को भी समझना चाहते हैं. दिस इज़ अ प्रोमिनेंट मॉडल नाउ. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सोशल इज ऑल्सो दिस. लेकिन हमें क्योंकि साइकोलॉजिकल को बताना है कि अभी जैसे ये तीनों इंटरकनेक्टेड है कि ना, ये मॉडल चल रहा है अभी, कि तीनों चीज़ें, रिलेशनशिप ख़राब हो तो आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, उससे फिजिकल हेल्थ ख़राब होगा, फिजिकल हेल्थ ख़राब होगा तो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जैसी चीज़ें हैं. तो इसको लेकर आप इसको आंसर कर दीजिए. मैं तो इतना डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना. इट विल टेक ओनली 2 मिनट 3 मिनट्स 4 मिनट्स, और क्या, सारे पॉइंट्स को लिख दिया. तो दिस वे यू विल बी एबल टू मेक जस्टिस ऑफ दिस थिंग, है ना. सो आई डोंट थिंक दैट यू विल रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कि इसमें क्या लिखे नहीं लिखे. You should even if you do not have direct data for that things, you can analyze, you can answer this thing. So most of the students who have attended our class, that they have successfully answered this question if they have attempted. तो अभी कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि what should be the answer of that thing. So I am explaining this one. If you are interested in taking psychology optional, and if you want that there should be a psychological some mentor who could guide you properly, जो क्लासेस भी दे, टेस्ट भी दे, डाउट भी क्लियर कर दे. तो वी आर ऑफरिंग न्यू बैच दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 31st of October. उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. वी आर ऑफरिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अपार्ट ऑफ दिस थिंग आवर रेगुलर वेरी फेमस प्रोग्राम दैट फॉर एसे टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड. तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि टॉप जो स्कोरर हैं इंडिया के, जो जैसे 160 से अब, वो ऐसे में बहुत ही रेयर मार्क माना जाता. तो ब्यूटीफुल माइंड स्टूडेंट्स रहे और उनका अच्छा कंट्रीब्यूट, उनके इंटरव्यू भी रखे हुए हैं अपने वेबसाइट पे. यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग एंड दैट आई थिंक विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ कैसे ऐसे लिखा जाता है. उनका पेपर भी मैंने लगा दिया है. तो आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं और अपने लिए, साइकोलॉजी ऑप्शनल है तो उसमें सही तरीके से आप प्रिपेयर करिए तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा. लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होता है. तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर कंटेंट नहीं भी हो तब भी आप आंसर लिख सकते हैं बाय एनालाइजिंग द थिंग्स. ओके, सो आई होप आई मेड इट क्लियर. मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और मॉडल आंसर पे. थैंक यू फॉर इट.